our special coverage of the Birmingham Commonwealth Games. Right now, I'm coming to you from the Coventry Stadium in Birmingham, where our judokas have won 2 medals this evening. Sushila Devi, in fact, she clinched a silver medal. This is not the first silver medal for her. She had won a silver in Glasgow as well. But the judokas make a comeback here because they did not manage to win any medals in Gold Coast, but they have made a great start here in Birmingham. Sushila Devi clinched India's 7th medal and the first outside weightlifting in this edition of the Commonwealth Games. She won the silver in the women's 48 kilogram category at the Games. In the final, she defeated Michela Witteboy of South Africa. The final proved to be an end-to-end encounter with both judokas not leaving an inch till the final whistle, as both of them failed to register a single point at the end of the regulation time. The contest then went into a golden score period where the South African clinched the gold medal after winning a point by putting Sushila Devi's shoulder to the mat. Vijay Yadav, the other judoka, also won a bronze medal today in the 60 kg clash. Remember, the judokas have made a good start. They did not manage to win any medal at Gold Coast. Their best was in Glasgow, having clinched 4 medals, a total of 8 medals for the judo team from the Commonwealth Games so far. The news of the day really has come from a new sport, or I would say rather an unknown sport, which is lawn bowls women's 4. This is a sport that was introduced during the Commonwealth Games in India in 2010. That was the first time India had a team in lawn ball, and they have come a long way now. In 12 years' time, they are going to make a podium finish. They have already guaranteed themselves at least a silver medal. They are going to play the gold medal match on Tuesday. The 4 women who have been a part of this campaign, they are from varied backgrounds. There is an administrative officer, a school teacher, a police woman, and a mother who have all combined to form this lawn bowls team. They came together for the first time in this international tournament, and I can tell you, you will hear more of them. Earlier today, I caught up with all 4 of them, and here's what they had to say, how they're trying to make the sport popular. Lawn bowls is a sport that has sprung the biggest surprise in this edition of the Commonwealth Games. This is the women 4's team that has reached the final, and they will be clashing against South Africa in the final. With me is Rupa Rani Tirke, Pinky, Lovely, and Nayan Moni, who is from Assam. Let me start with you. You are from Jharkhand. आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है. लॉन बॉल कैसे शुरू किया आपने और टीम में कैसे आए? लॉन बॉल मैंने 2007 से शुरू किया था. जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होने वाले थे, तब मैंने शुरुआत की थी. और टीम में सिलेक्शन का प्रोसेस था. उस प्रोसेस को पार करके मैं कॉमनवेल्थ टीम में सिलेक्शन हुई. हाँ, और आप कह रहे थे कि शादी हुआ, शादी के तुरंत बाद आप कैंप में चले गए, इतने टाइम से कैंप में रहे. जी 30 जनवरी को मेरी शादी हुई और 15 मार्च से कैंप शुरुआत हुआ था, और 15 मार्च के बाद मैं यहीं पे कैंप में ही हूँ और कैंप से भी यहीं पर खेलने आ गई. तो 1 महीना शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मोटिवेट किया और यहाँ खेलने के लिए भेजा. आप हमें बताइए, आप एक टीचर है दिल्ली में आरकेपुरम स्कूल में. ये गेम कब शुरू किया और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया? एक्चुअली आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर इन डीपीएस आरकेपुरम दिल्ली. मैं पहले क्रिकेट प्लेयर थी, तो क्रिकेट मेरा एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेरी पोस्ट थी डीपीएस आरकेपुरम में एज ए क्रिकेट प्लेयर थी, एज ए क्रिकेट कोच. लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ 2007 में इन गुवाहाटी, फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स में ये आया. पहले भी था ये कोलकाता में, लेकिन जब 2007 में आया ये, तो आई वन देयर इन सिल्वर मेडल इन वुमेन्स पेयर. उसके बाद हमारे स्कूल में हमारे जो डॉक्टर डी सैनी थे, एक्स प्रिंसिपल थे वहाँ के, उन्होंने ये गेम बोला कि यार इतना अच्छा खेला आपने, तो कोच तो एक और है हमारे पास, तो आप ये वाली गेम सिखाइए बच्चों को. तो सिखाते सीखते 2010 में जब ये गेम
आपके बच्चे, स्कूल वाले बच्चे भी अब लॉन बॉल खेलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल वाले मैं उनको कोचिंग देती हूँ साथ में, कि दिल्ली टीम भी बनी हुई है, तो हमारा वेन्यू था 2010 में जो डीपीएस आरकेपुरम में ही है, तो वहाँ बच्चों को सिखाती भी हूँ, और ये मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने यहाँ पर सीखा है तो मैं उसको फीड कर सकती हूँ बच्चों को। यहाँ पे आकर फाइनल तक पहुंचना कितनी बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद था फाइनल तक पहुंच जाएंगे लवली जी? उम्मीद तो था, लेकिन सचमुच पहुंच जाएंगे ये नहीं पता था, लेकिन पहुंचने के बाद सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है और अभी अंदर से और हिम्मत है कि सिल्वर को गोल्ड करना है कल। और सबसे डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट कौन सा रहा आपके लिए? मतलब आप न्यूजीलैंड को भी हराए, जो कि कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पावर हाउसेज इन लॉन बॉल। अभी अगर रहेगा कोई भी तो गोल्ड मेडल के लिए जिससे हम मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका, वही रहेगा। सबसे ज्यादा चुनौती किससे मिली आपको? इंग्लैंड से मिली हमें। इंग्लैंड से मिली है, लेकिन यहाँ पर जो भी टीम्स है सब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप, हम चारों का यही है कि हमें एक यूनिटी के साथ खेलना है, चाहे 1 पॉइंट लें और देंगे तो 1 पॉइंट, लेंगे तो 4-5। तो आप जो चारों हैं, 4 स्टेट से है, कैसे आप अपने बीच कोऑर्डिनेट किए? हाउ डिड यू गेट टुगेदर एज अ टीम? एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, अभी नहीं, हम लोग 2009 से ही जानते हैं। जब 2010 कॉमनवेल्थ का था उस टाइम ने हम लोग सब ने एक साथ कैंप किया था, इंडिया कैंप किया था, तो उसी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इतना साल हो गया, इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए शायद हम लोग का टीम कम्युनिकेशन के लिए अच्छा हुआ और शायद परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को मीन्स अच्छा मिला, इसीलिए पहले से जानते हैं इसीलिए। और आप भी कह रहे थे आपकी बेटी है, बेटी को छोड़ के काफी दिन आप कैंप में रहे, तो बेटी आप क्या कह रही है? बेटी बोलती है मीन्स मेरे सुपर मम्मी आप कर सकती हो, रोज बोलती है ऐसे फोन में, तो इसलिए उससे मुझे ज्यादा हिम्मत मिलता है, क्योंकि हम गुवाहाटी से है, असम से, मीन्स हम ओरिजिनल, मेरा घर गोलाघाट में है, तो हम लॉन बॉल के लिए ही हम गुवाहाटी में रहते हैं, तो ताकि एक ही ग्राउंड है असम में, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके, आगे बढ़ सके। तो हम बचपन से ही बेटी को छोड़ा है, तो बेटी ने मुझे जब वीडियो कॉल करके बोलता है मम्मी कम ऑन हरी अप बोलता है, तो मुझे और मीन्स मिलता है कि हम कर सकते हैं, उम्मीद जगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर गोल्ड मेडल अब जीत जाए तो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर द गोल्ड? अभी तक वैसा कोई प्लान मैंने बनाया नहीं है। बट अनरियल, सरियल लग रहा है ये मोमेंट आपको? अनरियल तो लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही एक सपना देखे थे, वो सपना को पूरा किया है, आधा अधूरा आज हमने, और कल पूरा करना है। आपको सरियल लग रहा है ये मोमेंट? नहीं, लेकिन इस बार सोचा था, क्योंकि एक्चुअली जो मूवमेंट आई है हमारे पास वो आई आफ्टर 10 years, क्योंकि 2010 में वी लॉस्ट ओनली बाय 1 पॉइंट, तो वो जो आज हुआ है, क्योंकि मैच इज नॉट इजी, 1 पॉइंट गिवन एंड टेकन हो रहा था, यही हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ होगा, इट्स अ मिरेकल। और हम चारों का जो था एक बॉन्डिंग बनी हुई थी कि नहीं, मतलब हमें छोड़ना नहीं है, इट्स ओके, न्यूजीलैंड है, होने दो न्यूजीलैंड, हमें नहीं पता न्यूजीलैंड के सामने कौन है, हमें सिर्फ हमारी स्किप है या लीड है, सेकंड है, थर्ड, हम सबका ये था कि ओके, स्किप हमें हमेशा मोटिवेट करता है, कम ऑन यार, जैक के पास ही डालना है, इफ यू कम टू द क्लोज टू द जैक वी वन द मैच, जैक पे डालेंगे और जीतेंगे, बस जैक पे ही डालना है। तो आप में से कोई कैप्टन है? हम लोग कैप्टन नहीं है, हमारे फोर्स की टीम में एक पोजीशन होता है सबकी अलग अलग जगह खेलने की, तो शुरुआत लवली करती है, फिर पिंकी करती है, फिर नयन करती है, फिर मैं लास्ट में करती हूँ, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है कि आपको किस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है, शुरुआत सबका अपना पोजीशन है और सबका अपना नाम है, हम लोगों का सबसे इमेजिंग बात है, हम सरों ने आज तक इंटरनेशनल एक साथ फोर्स टीम खेला ही हम चारों का, क्योंकि हम चारों खेला है लेकिन एक साथ नहीं, कभी नहीं खेला खेला, पहला कॉम्बिनेशन था हमारा, इस बार पहला कॉम्बिनेशन है, उसी में हम चक दे इंडिया, क्या बात थोड़ा सा है। किया है, तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे हम बढ़ना कल भी चाहते हैं। आएंगे और सिल्वर को हम गोल्ड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आपके साथ होगा, गो फॉर गोल्ड। थैंक यू सो मच। I'm joined at this hour by Sunena Kumari, who's been the former president of the federation and really instrumental in getting the sport to India. Sunena, many congratulations to you and the fraternity. You pretty much brought the sport to India. In 2010, no one believed in the power of lawn balls, and today it is giving India
a medal. How big is the moment? Tell us. So yeah, thank you for this. But I just want to first correct that Dr. Saini, Dr. D.R. Saini is the president of the Bowling Federation of India. I'm the deputy president of the Asian Bowl. But I think he's unavailable right now, so that's why I'm talking on his behalf and the Bowling Federation of India's behalf. It's a very, very, very proud moment for all of us. It's been a long journey, but it's been a fabulous journey. Winning against Australia is absolutely outstanding. The match today was, it was brilliant. It was just brilliant. Today, their match was amazing. Yesterday, we had the pairs of the boys who beat England. It was unbelievable. The performances, the way the team is actually playing this time is, I really don't have words to describe this, but I'm so, so proud. And we know we've got a couple of other events coming up. We have the finals tomorrow at 11:50 UK time. So, so we're hoping, let's see, we get the goal. It will be mind-blowing. Sulinda, please tell us a little bit about these girls. So we've got players. There are a lot of our players who've been there with us since the start also. We've got from the fours, we have two girls from Jharkhand, Lovely and Rupa. We've got one from Delhi, Pinky, and we've got one from Assam, Nayan. They've been fabulous players. They've been with us since, since literally day one. And they've been practicing. We've had the camp going on which the Federation had organized here in Yamuna Sports Complex in Delhi. So they've been there for over 3 months practicing. It's been actually there, you can see that the efforts have really shown now. And about this sport, one last thing about this sport, I was looking at the team and reading up about them. Lovely isn't particularly a young person. She's in her 40s. So while you don't need to be in your teens and 20s to play this sport, I would imagine what you need is skill and concentration. Am I right? Absolutely right. So when we got into lawn bowling, I think we were one of the only countries which had all the younger players. Otherwise, in the 2010 Commonwealth Games, we had our players who were like 17, 18, playing against like New Zealand and Scotland and all who were like above 70s. So you don't need there's no age. It's exactly skill and hand movement. So our players have really taken off. In fact, I think after seeing India, Malaysia have also got youngsters. Now nearly all the countries have turned it around and got a lot of youngsters. So we in fact started with Dr. Saini being the principal of DPS Archipuram and in our federation. We started with the youngsters. So we said, we'll turn the entire game around. So it's been amazing. So it's more of a hand and skill movement. You don't really need, the age is not too much of any kind of a bar. So you'll see a lot of different age groups. It's very interesting. Sunaina, as someone who brought the sport to India and opened India to the possibilities of lawn ball, this is a proud moment for you, for all of us. And we'll keep talking to you when the medal comes, whether it's a silver or a gold, irrespective of the color of the medal, it'll still be a very, very big moment for India. Thank you very much for joining us on this special broadcast. It'll be a great moment for the sport of lawn ball that has been relatively less known in India till now. So from obscurity, now it is going to attain stardom. There's going to be a lot of talk about the sport of lawn ball once these girls manage to win a medal. And remember that this is not the only event that they can win medal. They have 3 more events in lawn balls where medals can come for India. Right now, let's also talk about great news that have come in from the boxing ring. Amit Pangal has stormed into the quarterfinals of the games. Pangal beat Narmi Berry of Vanuatu by a 5-0 unanimous decision. Amit Pangal's speed made him unplayable against the Vanuatu boxer, and he won all 3 rounds. The Indian moved into the quarters after a dominant 5-0 win. Talking about squash player Saurav Ghoshal, he has
also won his match. He defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-4, 11-4, 11-6 in the round of 32. Indian ace squash player Saurav Ghoshal has defeated the Canadian national champion, world number 32 in men's singles at the Commonwealth Games. Saurav, India's top-ranked player, beat number 62 David 3-0. He will take on world number 34 Greg Loban of Scotland in the quarterfinals. Well, that's all we could pack into this special segment for now. But do keep tuning into NDTV for all the special updates from Commonwealth Games in Birmingham. Time for a quick break on the show. More on the other side. Stay tuned. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.